Hello and welcome to the highlights of match 15 of Osaka Batteries presents Pepsi National T20, the encounter between Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. Taking a look at the points table at the start of match 15, Balochistan at number 5 facing the number 3 team, KP. Overnight rain expected a bit of moisture underneath the surface, so the sides winning the toss would probably go to field first. At the toss, Balochistan won it and their captain Bismillah Khan opted to bowl first. Looking at their selected 11, Balochistan making that forced change. Their captain out of injury, Imamul Haq, is replaced by Ahmad Butt. Khyber Pakhtunkhwa also making a replacement. It's because of the injury to Fakhr Zaman, Israrullah comes back and Muhammad Imran also gets an opportunity in the 11. Let's join our commentators, Tariq Saeed and Marina Iqbal. Let's play. अच्छी बॉलिंग, अच्छी दौड़, विकेटों के दरमियान रिजवान, इसरारुल्लाह अरसा दराज से एक साथ खेले हैं और इसे उठाकर खेला 4 रन्स के लिए मोहम्मद रिजवान ने। आउटफील्ड सुस्त है लेकिन बहुत ज़ोर से हिट लगाई मोहम्मद रिजवान ने और उनने उस जमूद को तोड़ दिया। और शानदार स्ट्रोक, इस बार कोई फील्डर अपनी जगह से नहीं हिल सका। टाइमिंग लाजवाब और फुटवर्क उम्दा इसरारुल्लाह का। और इसे उठा खेला और गेंद बाउंड्री लाइन क्लियर कर गई। फील्डर थे सुहेल अख्तर बाउंड्री लाइन पर, लेकिन देखने के अलावा कोई चारा नहीं। स्ट्रगल कर रहे हैं जुनैद खान। लेंथ वही थी, इस बार लाइन थोड़ी बदली, लेकिन उसका भी फायदा उठाया इसरारुल्लाह ने। टाइम मिल गया था उनको फैच करने का और पल्ले के बीच में से निकला ये गेंद और बाउंड्री के पार 6 रन्स के लिए। Got to post a good total. That's put away nicely. Wasn't a great deal wrong with the ball, it's got to be said, but a nice shot for that total. But these sort of blows will help the cause, that's for sure. That's 10 in 2. We're the rocket at the moment, KP in this over. And Umayyad Asif at the receiving end. What a brilliant shot. It's definitely the last boundary has given that confidence to Mohammad Rizwan. He loves to pick it up from offside, take it to the leg side. There was a fielder at the boundary, but he was a spectator. Cries of catch it. It is over the top and it's going to be safe, and it's also going to be 4. So this is a very, very good over now for KP. Wanting to go hard down the ground, he's just gone high. It's in the sun for a while. That's a good catch. That is a very good catch. It was in the air for a while, so Butt has struck. Ahmad Butt getting the first wicket, and Haris Sohail has been amongst the catches for Balochistan. Yesterday a few good ones in the slips, and today a good catch. It was in the sun, reverse cup. Whipped away again. You've seen that shot before. That's signature from Rizwan, even though it was a bit of the bottom of the bat. He might need a bit of chalk for that cue. Tempting him, and he obliged. Quick feet. Keepers have often got quick feet. Shows the balance that he's got, the confidence he's got, and that's a lovely way to seal the end of that over. So that's put pressure back on the leg spinner. Hard down the ground. Gee, that's beautiful. That is a beautiful shot. What a lovely bat plane that is. Straight through the line. That is superbly played. चार। जब आप बीट कर देंगे सर्कल में फाइन लेग के, तो फिर इसको रोकना मुश्किल है, चाहे जितनी बारिश हुई हो रात को। ये शॉट्स बाउंड्री दौड़ के भाग के जाएंगे।
और शानदार शॉट कैरी नहीं किया और बाउंड्री पर कैरी नहीं किया, लेकिन फील्डर के हाथों पे ज़रूर कैरी कर गया और आउट रिजवान। कमेंटेटर्स कर्स। कमेंटेटर्स भी नहीं, कमेंटेटर ही कहते हैं, एक ही आदमी की, मैंने ज़्यादा ही बोल दिया शायद, लेकिन नहीं, ऐसा शॉट अवेलेबल तो था, अटैक किया था इन्होंने, बस ज़्यादा कहते हैं ना कि अंडर द बॉल नहीं आ सके, ज़्यादा पावर नहीं दे सके बॉटम हैंड से। कैच अच्छा लिया, बड़ा अच्छा रोप की अवेयरनेस थी अमाद की। ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है या गेंद निकल जाएगा, निकल गया गेंद। थोड़ी देर के लिए लगा कि शायद फंस जाएंगे आसिफ आफरीदी, क्योंकि बिल्कुल टो एंड पे लगा था ये बल्ले के, लेकिन 6 रन हासिल हो गए। जस्टिस तो कर दिया इन्होंने, आते ही 6 रन हासिल किए और कप्तान की थिंकिंग, मैनेजमेंट की थिंकिंग को जस्टिस उन्होंने ज़रूर किया। जी, दिल मुंह में आया हुआ था उनके जब तक बॉल जो है वो क्रॉस नहीं हुई, फिर जस्टिस हो गई। फिर बड़ा शॉट खेलने गया और ये गेंद पार कर जाएगी। 6 और रन। ये पहला जो छक्का इन्होंने लगाया था वो इस तरह का था जो आफरीदी ने एशिया कप में अश्विन को लगाया था, बस छक्का हो ही गया। इंपॉर्टेंट ये है कि 12 रन ऐड हो गए टोटल में। ओ एज हुआ, लेकिन बिस्मिल्लाह, इसको मिस कर गए। 4। ठीक है। और एक और बड़ा शॉट, ये भी लग रहा है कि इस बार कैच हो जाएंगे और आउट। बहुत मुश्किल है उमैद आसिफ के हाथों से बचना, लंबी हाइट है उनकी, तो ये एक कह सकते हैं छोटा और सनसनीखेज जो एक मोमेंट था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस ओवर में 2 विकेट्स हासिल हुई। काशिफ भट्टी ने जो कॉमन सेंस है उसको अपनी जगह पे वापस लेकर आए। बॉलर हैं, उन्होंने लेग स्टंप पे गेंद कराया, बड़ी बाउंड्री है, उमैद आसिफ ने कैच किया। अच्छी शॉट, 4 रन के लिए अपने आप को रूम दिया बैट्समैन ने और 4 रन हासिल किए। Just where the fielder was brought in. Short square leg, and that's disappeared to the fence. And that's some intelligent batting. Got the length this time, and he's been able to get underneath that, and it's gone all the way. And that length I was talking about, there it was, and Iftikhar was looking at that position because he knew that was a place where he can get the boundary, and he hits for the maximum. Slower, flat batted down the ground, maximum. Couple of sixes in the over, and that prediction of 209 on the cards. Go short, thumped long and hard. What a start to the over for Iftikhar. Length again, smashed again, this time over extra. What a shot. Excellent batting there by Khyber Pakhtunkhwa. The attack is on. Again length ball, again hammered, but this time straight to the man. A big wicket for that 200 mark, Khurram Shehzad. He came back, he was hammered down the ground, but this time bottom of the bat, and Sohail Akhtar makes no mistake. तेज शॉट, आउट। फ्लैट शॉट मारा था अहमद बट के, सीधा गोद में जाके गिरी बॉल। और एक और कामयाबी जुनैद खान को। वेल सेट बैट्समैन साहिबजादा फरहान अब वापस जाएंगे। यहाँ और इस मौके पर यही सही लाइन भी है, क्योंकि लेंथ में जरा सी खता थी। लो फुल टॉस। नहीं 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 नहीं, इस बार लो फुल टॉस दे दिया। तोहफा, बहुत ही जानदार और शानदार शॉट मुसद्दिक का। भाई ये तो ऑब्वियसली आप अपने लिए जो है ना प्रॉब्लम की कर रहे हैं, कोशिश कर, ऐसी लेंथ होगी
और आपको पता है कि जो बैटर है बिल्कुल डीप खड़ा है क्रीज में, तो उसको बड़ा मौका मिलेगा और अपनी मर्जी से वो आपको पूरा दिन खेलता रहेगा मिड विकेट पे। बड़ा शॉट लगाया और वाइड खेला है लॉन्ग ऑन के, बीट कर जाएंगे उनको और पहला चौका इस ओवर का। 200 रन मुकम्मल हो गए और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट का अब तक का हाईएस्ट स्कोर भी रजिस्टर हो गया स्कोर बोर्ड पर। और मिस कर दिया गेंद को, स्लोअर बॉल था और सिंगल भी ना ले पाए बाय का, तो इस तरह से 202 पर जो है बात बनी है। At the end of 20 overs, KP looking so good and getting the highest score up till now in the tournament, 202 for 5, with a brilliant knock from Rizwan once again, 40 of 34, 43 of 31 from informed Sahibzada Farhan, and a quick fire, 36 of 18 from Iftikhar Ahmed. Balochistan bowlers, not much to cheer about. Looking at the wickets column, 2 for Khyber Pakhtunkhwa and a wicket apiece for Ahmad Butt, Junaid Khan and Khurram Shehzad. So the biggest total to chase up till now in the tournament, 203 for Balochistan. Let's join our commentary, Mike Hazeman and Sanamir. Let's play. Bit of swing, nicely worked. Oh, look out. I don't mind a bit of aggression, I must say. I'm not sure he was throwing it at the batsman. I think he was just letting the batsman know he's there. Edge. Fine, and 4. And Shaheen Afridi. There's one. He's got one on a power play. There it is. Bang on cue. And the change of angle has worked for Shaheen Afridi. He was taking the ball away. This time came around the wicket to Bangalzai. He threw his hands again and a good catch by Sahibzada Farhan. And that's the wicket. The new ball bowler. Bowled him. He keeps doing that. It's not too much, that's for sure. You can see that that means quite a bit to him. That was a really good delivery. Nice and full in the block hole. Had to drag it back onto the stumps, I think, but he struck. And that's the signature bowled by Shaheen Afridi. He wants to take the wickets with the full deliveries, with the new ball, and that's what he's got. It's away nice and fine, and that's 4. So that's a nice brisk way to start. इस बार हवा में लेकिन गैप में 4 रन्स। हारिस को इस तरह के खतरात मोल लेना पड़ेंगे। बैक ऑफ द हैंड, स्लो डिलीवरी और पिल पड़े। इस बार शानदार छक्का लगाया हारिस ने। इसे स्मैश किया, गेंद सीधी गई हाथों में। आसिफ अफरीदी जिन्होंने आज बड़ी उम्दा बैटिंग की, बड़ा आला कैच लिया और हार्ड लेंथ को हिट करने का नतीजा ये हुआ अरशद इकबाल का कि वो सुरखरू हुए। सीधा मारने जाते हैं, ये स्ट्रेंथ है इनकी, लेकिन इस बार सही कनेक्शन नहीं कर पाया। अच्छा कैच था आसिफ अफरीदी का। इस बार बाउंसर करने की कोशिश, लेकिन अब्दुल्ला शफीक तैयार थे इसके लिए। खूबसूरती से खेला उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से 4 रन्स के लिए। अंपायर का इशारा कि ये गेंद बाउंड्री के बाहर जा गिरी है। और कदमों का इस्तेमाल किया, बुलंदो बाला छक्का लगाया। एक बार फिर बैट्समैन है नौजवान अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने अपने ताबनाक मुस्तकबिल की एक और झलक दिखलाई। 50 पर 3। Timed that really well, surprisingly. Everybody was looking maybe a couple of runs, but he's timed it so well. And that should be out.
Iftikhar takes it cleanly and he's nowhere in the picture. Big appeal and another one bites the dust. Procession continues. Our stint hasn't been lucky for the Balochistan team. A couple of wickets already gone in last couple of overs. Playing across the line and gone. सातवीं विकेट गिर गई, बाहर निकल के खेलने की कोशिश की, गेंद पे कोई टर्न नहीं था, सीधा गेंद बल्ले और बॉडी के बीच में से कीपर के हाथों में। चांसेस लेने थे और उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, लेकिन इस तरह के ब्लाइंड चांसेस नहीं। बहुत आसान था रिजवान के लिए। बड़ा शॉट उमैद आसिफ का 6 रन के साथ ओवर का अख्तिताम करेंगे। अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को ऐसा शॉट लगा सकते हैं तो आप जरूर अपने कप्तान से बैटिंग की डिमांड कीजिए। तो अगर आप 4 रन हासिल कर लिए, यहाँ पे एक और अलग ही मोड में है इस वक्त। अब थोड़ा सा बल्ला घुमाया है, हाथ खोला है। बल्ला घुमाया, जब ये हो सकता है तो बाकी भी कर सकते हैं। सोहेल अख्तर का शानदार शॉट, फुल वाइड ऑफ स्टंप के बाहर और स्लाइस कर दिया पॉइंट के ऊपर से 6 के लिए। ये बॉल ऐसा था जिसपे इनवाइट किया था इमरान खान सीनियर ने कि ट्राई कर लें बाउंड्री ऑप्शन के लिए, और वही किया। सोहेल अख्तर ने पूरा हाथ घुमाने का मौका मिला। शॉट, इसको तो आगे देखने की जरूरत भी नहीं कि लैंड कहां करेगा, ये बाहर ही बाहर है। शानदार छक्के के साथ अख्तिताम 18 इस ओवर में, 110, 7 खिलाड़ी आउट। Oh, that's picked up. My goodness gracious me. That is beautiful. Wonderful leverage. Pick the bones out of that. Just mentioned the artist. Look at this for a painting. Flick into the stands. That's moosed for 6 runs. Good strong wrists. No half measures in that. Just let the wrist do the work, breaks the wrist, hits it hard, sails away. That's a quality hit. Gone again. Gone another one. That's a beauty. What a good shot that is, and that brings up the 50. 35 balls, 4 sixes and a couple of 4s. That's solid enough, but he's picked out the fielder. Musaddiq with a catch. Yeah, short. Umaid Asif just having fun trying to knock everything out of the ground. Musaddiq. Now, who wants this one? This should be taken. Oh, it's grassed. It's down. It's not taken. Oh, no. What is going on? Iftikhar normally gobbles those up. They've been brilliant throughout the 39 overs, but this the 40th over, I should say, not so. Caught off a no ball. This one, Iftikhar, well, how did that slip out? I wonder if he was worried about that advertising triangle behind him. He perhaps didn't quite know how close he was. Wide of the crease that time, and that's been whipped away for a boundary. 6 runs it is. And here's the last ball. Going down the leg side, delivering for very wide of the crease, so that's why I was sliding down, I think. But eventually we have finality to this game. It certainly meandered.
Some errors being made, catches going down, no ball bowled as well, but KP have got up, and they've got up in style. It's been a really comprehensive victory, this one. The struggle continued for Balochistan, first with the ball and then when they were chasing. Just weren't anywhere near the 203 to win this match. 147 for 9 in their 20 overs. It was Sohail Akhtar who got some big hits going in the end, got 61 not out of 43. Junaid Khan remained not out on 1, but that was all that could be spoken about. Not to forget Umaid Asif got a good outing, 17 of 14. KP bowlers were clinical, with Arshad Iqbal grabbing 3, Asif Afridi 3 for 8 in his 4 overs, and 2 for Shaheen Afridi. So they were bowling like a unit, and they were all over Balochistan batters to win this one. Taking a look at the match summary, where Khyber Pakhtunkhwa posted the highest total in the tournament up till now, 202 for 5. Balochistan lost this game by a huge margin of 55 runs and losing out an opportunity on the 2 points as well. Man of the match was Asif Afridi for his brilliant bowling, 4 overs, 3 for 8, and a quick fire, 2 sixes and a boundary to win this award. After 15 games, Khyber Pakhtunkhwa jumped to number 2. Balochistan stays at number 5. And that is how it goes. Sindh grabbing that number 1 position and refusing to leave. Hope you've enjoyed the highlights of match 15. Until next time, it's goodbye.